is very apprehensive that another Babri Masjid will happen right before their eyes. Now, that is why the Muslim community is looking towards the Honorable Supreme Court and the courts of law that they will not allow the repetition of the Babri Masjid or the demolition which has happened. And I'm sure that the courts of law they have done justice, they will do justice, which will increase the more faith in the Constitution, because the Constitution is the only instrument which can do justice and which has done justice. And the Supreme Court has inherent powers in Article 142 to do complete justice. The reason I say is that because if you look at the sequence and the chronology of the Babri Masjid whole issue, it started with Chabutra, then surreptitiously idols were placed, then unlocking of gates, demolition of Babri Masjid, makeshift temple was erected, then permission to pray in that makeshift temple was given, and then ultimately the judgment went against the Supreme Court title suit. The Muslims lost it, and in the criminal case, not a single person was convicted. So that is why we are very apprehensive. And please remember that it is not one issue of Gyanvapi. We have recently seen that the district court have allowed a suit in the Mathura Eidgah issue, despite an agreement that happened between the Muslims and the Krishna Janambhoomi Sevasthanam Sangh, which happened in 1968. Thirdly, there are many issues wherein the RSS and the BJP claims that at one point of time the masjids were not masjids. Coming to today's judgment, Supreme Court, as you must have heard, Supreme Court now has directed that a district magistrate will listen to this case. The Supreme Court has also said that the 7-11 will be heard on priority, and in that way the Supreme Court, by transferring to district magistrate, because the lower court honorable judge was listening to one side of what the petitioners were coming and telling him. Thirdly, the Supreme Court has said, has directed to the district magistrate of Varanasi that Wazu arrangement should be made. In the earlier order of May 16, the Supreme Court has said that whatever is the religious observance should be allowed. In a pond, if water is there, the Muslims do ablution and Wazu to perform the namaz. The Supreme Court have said that allow the religious observance, but it is very, very unfortunate that the local district magistrate is completely collaborating with the petitioners. If the Supreme Court have said allow the religious observance, and religious observance includes doing ablution and Wazu. So today's order also the Supreme Court have said that Wazu should be allowed, and I hope that Muslims will be allowed to do Wazu from the pond. The fountain that is there, which is now part of a judicial case, that can be protected. But the Supreme Court has said that allow the Wazu, because that is doing Wazu for a Muslim is part of religious observance, because I cannot perform namaz unless and until I do Wazu. So in every masjid you will find a place to do ablution, and that is the rightful place. Thirdly, the Supreme Court has said to preserve that fountain, or what the other side calls it. It can be preserved, but at the same time that pond should be open. So we'll hope that the district magistrate will hear it on priority, but my disappointment is on this issue that I was expecting that the Supreme Court will nip it in its bud, because this whole 91 Act categorically states that this act was made so that future controversies don't arise. So on that part, I was expecting the Supreme Court would nip it in its bud, because every day we are seeing newer issues are coming up. So this is my reaction
to today's Honorable Supreme Court order, and the SLP is still with the Supreme Court, and we hope that the district magistrate will do justice in this matter and will hear it as the Supreme Court has directed, that the 7 order should be heard on priority. सर बार-बार आप 1991 का एक्ट याद दिलाते हैं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आप कह रहे हैं वो सही है, लेकिन जो सीमाएं तय करने के लिए भी उसमें एक ऑप्शन है, ये भी सुप्रीम। एक बात सुनिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट में रिफ्लेक्ट किया आज के ऑर्डर में अपने? बताइए आप। नहीं, आप बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा वो बात, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि अगर किसी ज़ोरास्ट्रियन या किसी जगह पर किसी और मज़हब का निशान मिलेगा तो क्या चेंज हो जाएगा? क्या वो चेंज नहीं कर सकते? हाँ, ठीक है, वही से तो नहीं, आप नहीं कर सकते। इसका ऑब्जेक्शन अहमदी साहब ने लिया, और आप पढ़ लीजिए क्या कहा जजेस ने। बोले कि हम मिसाल दे रहे हैं, तो वो ऑर्डर का हिस्सा नहीं है। तो 91 का एक्ट क्यों बनाया गया? 91 का एक्ट बनाया गया टू प्रिवेंट फ्यूचर कंट्रोवर्सीज। और हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वो जो बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 91 का एक्ट भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, हम पूरे कोर्ट्स को चाहेंगे कि उसको इम्प्लीमेंट करें। वो 91 का एक्ट भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया उसको। और जो अंग्रेजी में कहते कि वॉक द टॉक होना चाहिए अभी। लेकिन सर आप इसको बार-बार फाउंटेन है बोल रहे हैं, मगर ये तो ऑब्जर्वेशन है ना कि ये शिवलिंग माना जा रहा है। नहीं, वो देखिए, जो कोर्ट के जज ने बगैर मुस्लिम पक्ष को सुना, बगैर सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट जज साहब के पास गई, जज साहब ने दूसरी पार्टी जो दौड़ते उनके पास गई, उनको सुना, और बगैर मुसलमान को जो पार्टी है उसमें इंतजामिया कमेटी, बगैर सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट में उन्होंने गलत ऑर्डर दिया। इसीलिए सुनिए, ये सुप्रीम कोर्ट में बात रखी गई, और हम सुप्रीम कोर्ट ने अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास इस केस को भिजाया है, और हम उम्मीद करते हैं कि वो फेयर तरीके से इन तमाम चीज़ों को सुनेंगे। लेकिन आप तो डिटरमाइन कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, नो, नहीं, आप गलत कह रहे हैं। क्या वो ऑर्डर का हिस्सा है आज के? नहीं, देखिए, जो जजमेंट में कहा जाएगा वही फॉलो किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने एक मिसाल देकर कहा, अगर आप ये बोलेंगे कि मस्जिद में किसी और की निशानी मिल जाएगी तो क्या मस्जिद का कैरेक्टर चेंज हो जाएगा? वही नहीं, नो, ऐसा नथिंग डूइंग। वो आप लोग गलत रीड कर रहे। आप किसी भी सीनियर लॉयर को बिठाकर पूछ लीजिए जो मुझसे काबिल है, वो बोलेगा कि 91 एक्ट ये कहता है कि नेचर एंड कैरेक्टर चेंज नहीं हो सकता। और आप बार बार जो सर्टन की बात कर रहे हैं, वो एक मिसाल के तौर पर कहा गया, जो आज के ऑर्डर में रिफ्लेक्ट नहीं है। सर क्लियरली मैं आपको पढ़ के बता दूंगा। पढ़ के ऑर्डर बताइए। नहीं, सुनिए, नहीं, आप ऑर्डर पढ़िए। ऑर्डर पढ़, नो सपोज नथिंग, आप ऑर्डर पढ़िए। नहीं, आप ऑर्डर पढ़िए। आप देखिए, ऐसा नहीं हो सकता। आप नहीं, मैं आपकी बात का यकीन ही नहीं कर सकता। आप आज का ऑर्डर पढ़िए। चलिए बताइए मेरे को उसमें क्या है। सर आप कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष को बिना सुने ही उन लोगों ने वहाँ पे अरेंजमेंट्स करने के लिए वो प्रोटेक्शन करने के लिए कहा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरेंजमेंट्स होने चाहिए वहाँ पे वजू करने के लिए। हाँ, तो सुनिए, जब अहमदी साहब ने कहा कि क्यों अल्टरनेट अरेंजमेंट, तो कोर्ट ने कहा अल्टरनेट अरेंजमेंट नहीं। सुनिए, सुन तो लीजिए। अल्टरनेट अरेंजमेंट ने क्यों जब पूछा गया, तो कोर्ट ने कहा कि पानी मुहैया किया जाना चाहिए। पानी कहाँ मिलेगा? पौंड में मिलेगा? और नहीं मिलेगा। पानी पौंड के सामने नल की टूटियां हैं, वहीं पानी मिलेगा। और पानी कहाँ मिलेगा? कोर्ट ने कहा कि हम अल्टरनेट अरेंजमेंट की बात नहीं कर रहे। कोर्ट ने कहा अभी डायरेक्ट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और उस पॉन्ड के पास, वो पॉन्ड को, और उस पॉन्ड में जो नल की टूटियां हैं उसको इस्तेमाल करेंगे वजू करने के लिए। सर ऐसे जो रेफरेंस किया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे, इस पे आपका क्या कहना सर? क्या ये जो प्लेस सिंबल, जेरूसलम सिंबल पे पाया गया है, रेफरेंस की तरीके से। अरे सुनिए, आप देखिए, वो उसके लिए लंबी बहस हो जाएगी।
आप मेरे को बताओ वो जो आज के ऑर्डर में कुछ है क्या वैसा, बताइए। No, see, these are exchanges which the judges and the lawyers will have. Are you trying to elevate it to the judgment? Don't elevate that to the judgment. But sir, there is a report No, which was leaked no. yesterday. So and yes, what did the court say on that? The report should not have been leaked, but the damage has already been done. But report also shows that they are evidence there. No, that the court has said the report should not be leaked. Now it has been gone to a district magistrate, and on priority 711 order 711 will be heard. That is the maintainability of this whole suit. रुक जाइए। 91 के कानून की बात कर रहे हैं हर मामले में, क्या मुस्लिम पक्ष इस मसले को लेकर एक अलग से कोई मूवमेंट या कोई ऑर्गेनाइज ढंग से इसको स्थापित करने के जो भी बनवाने के लिए कोई अपील दायर करेगा? क्या है, फिर से बोलिए। तो 91 का हमेशा हवाला दे रहे हैं, हर मामले में दे रहे हैं हवाला आपको भी देना चाहिए क्योंकि कानून है वो। तो क्या उसको मुस्लिम पक्ष पूरे टोटालिटी में ऑल इंडिया लेवल पे कोई जाके उस कानून के लिए आप लोग कुछ करने वाले हैं कि नहीं, कानून को करने क्या हो, वो तो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है, हमको करने क्या जरूरत है। हम इतना ही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कह चुका कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का संविधान का हिस्सा है, तो हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि कोर्ट्स वॉक द टॉक करेंगे, बस और कुछ नहीं। हमको वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, पैराग्राफ नंबर 83 में, और ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ साहब उस जजमेंट के जजेस में से हिस्सा थे। No. See, I am sorry. You are ignorant about this law. You cannot call the exchanges between the honorable judges and the lawyers as a judgment. Please don't do that. No, please don't do. No, don't do that. No, don't do it. You are completely on the wrong path. In fact, I am telling you, you will be hauled for contempt of court. Don't do it. Order copy is not out yet. So, order copy is there. You see on the live law, bar and bench, it is there. Go and see it. सर, सुप्रीम कोर्ट में ये तेलंगाना के मुतालिक एक इनकाउंटर हुआ था, उसके मामले पे भी डेवलपमेंट आया। मैं हर एनकाउंटर के खिलाफ हूँ, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू के ज़माने में अजीज़ और आज़म का इनकाउंटर हो, चाहे सोहराबुद्दीन का इनकाउंटर हो, चाहे वो नईम का इनकाउंटर हो, चाहे ये जो शमशाबाद में इनकाउंटर किया गया है, मैं हर इनकाउंटर के खिलाफ हूँ, क्योंकि इनकाउंटर रूल ऑफ लॉ को कमज़ोर करता है। हम रूल ऑफ लॉ से सरकार चलनी चाहिए, रूल बाय गन से नहीं चलनी चाहिए। बस मैं इतना ही कहूँगा इस मामले में। No, I don't. No, you are completely ignorant of the law. There are exchanges which will happen between the honorable judges and the lawyers. Please don't elevate that to the level of a judgment. That is why I keep on repeating to you, what you are saying, is it there in the order of today's Supreme Court? It is not there. So don't try to take out what suits you. That will also not suit you, because you don't know what example he has given. That will, in fact, if I go into that, it will harm the side which you are trying to represent. So, sir, it should be